Hello everyone, welcome to my channel Physics Tricks. So let's start with Fluid Mechanics DPP2, and in this we have the sixth problem from H.C. Verma. So see here, if water be used to construct a barometer, what would be the height of water column at standard atmospheric pressure, that is 76 सेंटीमीटर ऑफ मर्क्यूरी. ठीक है, तो यहाँ पर दिया है कि अगर वाटर हम यूज करेंगे तो बैरोमीटर की जो हाइट है वो कितनी लेनी पड़ेगी हमको, है ना. व्हाट वुड बी हाइट ऑफ द वाटर कॉलम. ठीक है, तो देखो हमको चाहिए एटमॉस्फेरिक प्रेशर. सो एटमॉस्फेरिक प्रेशर पी नॉट इज इक्वल टू, वी नो दैट इट इज 76 सेंटीमीटर ऑफ मर्क्यूरी. तो इसको हम लिख सकते हैं डेंसिटी ऑफ द मर्क्यूरी इनटू acceleration due to gravity into height of the mercury column, and this is equal to the density of the water into acceleration due to gravity into height of the water column, है ना. क्योंकि एटमॉस्फेरिक प्रेशर के लिए तो हमको मेजर करना है व्हाट इज द हाइट ऑफ द वाटर कॉलम. ठीक है, सो एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज इक्वल टू रो जी एच फॉर मर्क्यूरी एज वेल एज फॉर वाटर. ये जी गेट कैंसल, and we have height of the water column is equal to density of the mercury into height of the mercury divided by what is called as the density of the water. Now what is the density of the mercury? It is 13.6 into height of the mercury column we have is 76 centimeter divided by the density of the water is 1. So I took everything in a Celsius unit, so it is 13.6, then 76 and 1 we have. So now if I just multiply this, I'll just multiply, it is 13.6 into 76, so you will get 1033.6 centimeter. Indicates what is in meter, it is 10.33 meter is the height of the water column required. Okay, so that is huge height, right? 10 meter of height of the barometric tube required to construct द बैरोमीटर वी कैन से. ठीक है ना, अगर हमने वाटर यूज किया तो. लेकिन अगर हम मर्क्यूरी यूज करते हैं तो 76 सेंटीमीटर इज इनफ, राइट. सो आई होप दिस इज क्लियर. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव, एंड वन मोर थिंग, yes, this H is called as the pressure head. That you need to remember because in some of the examination they might have asked this, what is the pressure head for water, for atmospheric pressure, what is the pressure head for mercury, for atmospheric pressure, like that they might ask. Okay, so that is the pressure head. What is the SI unit of pressure head? If they ask, it is the meter. ठीक है, चलो next question, seventh question. As you can see, find the force exerted by water on a 2 meter square plane surface of a large stone placed at the bottom of a sea 500 meter deep. तो हमको क्या निकालना है? sea surface है. Does the force depends on the orientation of surface? Okay, force निकालना है on 2 meter square plane surface of a large stone. ठीक है, तो उसके लिए हमको क्या चाहिए? प्रेशर चाहिए पहले. तो what is the pressure at the bottom of the sea? We have pressure P is equal to P naught plus rho g h. And here, that one thing that you need to remember is whenever they say water tank, whenever they say a tube, right, like a tube which is closed from up, like this, if they gave, indicates what you have to only consider the gauge pressure. क्यों? क्योंकि वहां पर जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो जीरो हो जाएगा, राइट. ओनली ड्यू टू द वाटर कॉलम यू हैव टू कंसीडर. ठीक है, वो कैसे जीरो हो जाएगा? क्योंकि यू आर क्लोजिंग इट. सो एवरी एटमॉस्फेरिक प्रेशर एक्टिंग ऑन द sides of a water tank, it is not on the water. That is the reason you have to consider rho gh. But if they gave sea, if they gave lake, like that, if they give open surface, right, in that case you have to consider the atmospheric pressure. तो देखो यहाँ पर P is equal to P naught plus rho gh. तो यहाँ पर मुझे लेना पड़ेगा 10 to the power 5 plus rho is 10 into g is 10 into h we have is 500. Now if you just solve this, you will get 10 to the power 5 plus this is 5 into 10 to the power 4. So you can take 10 to the power 4 common. So 10 plus 5 into 10 to the power 4, and you will get 15 into 10 to the power 4, what is called as the Newton per meter square. So this is the pressure we have. Now force is nothing but pressure times the area, right. Pressure times the area. ये pressure जो है वो it is independent on the orientation, isn't it?
सो जो फोर्स होगा वो तो ऑलवेज एक्ट्स on the plane surface of the stone, whether it is horizontal, whether it is like this, whether it is any direction, right? So pressure, what is the pressure? 15 into 10 to the power 4. And what is the area of cross section given? 2 meters squared. So it is 30 into 10 to the power 4 Newton of force is acting on the stone. And yes, it does not depends on the orientation of the stone. It does not depends on the orientation of stone. So it does not depends on the orientation of stone. So I hope this is clear. I hope this is clear. This is the 7th problem which we have. Now 8th problem. What is the water is the field? Water is filled in a rectangular tank of size 3 meter, 2 meter and 1 meter. ठीक है, तो एक rectangular tank है हमारे पास, length, breadth and height given. ठीक है, ये रेक्टेंगुलर टैंक है, सपोज कर लो. लेंथ इज गिवन दैट इज 3 मीटर, ब्रेड्थ इज गिवन दैट इज 2 मीटर एंड हाइट इज गिवन दैट इज 1 मीटर. ठीक है, फाइंड द टोटल फोर्स एक्सर्टेड बाय वाटर ऑन द बॉटम सरफेस ऑफ द टैंक. तो हमको निकालना है कि ये जो वाटर है इस वाटर की वजह से बॉटम सरफेस पे जो फोर्स लगेगा वो कितना होगा. ठीक है, तो देखो फोर्स कितना होगा वो निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा. पहले तो यस वी हैव टू कंसीडर द प्रेशर ओवर देयर. सो प्रेशर वी हैव इज a rectangular tank given. Now I told rectangular tank given, whenever tank given it is only due to the water column that we have to consider. So rho gh only. So what is rho over here? It is 10 to the power 3. G over here 10 into h over here 1. So 10 to the power 4 Newton per meter square is the pressure we have. And what is the force then? So force we have is equal to the pressure 10 to the power 4 into the area we have is 3 into 2, that is 6. So we have 6 into 10 to the power 4 Newton is the force which is acting at the bottom of rectangular tank. This is A. B. Consider a vertical side of area 2 meter cross 1 meter. Take a horizontal strip of width dx meter in this side situated at a depth of x meter from the surface of water. Find the force by water on this strip, right? A strip. ठीक है, तो हमको एक टेक हॉरिजॉन्टल, ओके, कंसिडर अ वर्टिकल साइड ऑफ एरिया 2 मीटर एंड 1 मीटर. तो हमको जो वर्टिकल साइड है ये, इसका एरिया कितना कंसिडर करा है 2 मीटर एंड 1 मीटर. और यहाँ पर हमको एक स्ट्रिप लेनी है. ठीक है, मैं एक बड़ा सा डायग्राम बना देता हूँ. यहाँ पर एक स्ट्रिप लेनी है. कितने डिस्टेंस पे देखो, from the surface of water find, okay, from the surface of water depth of x from the surface of water. तो यहाँ से x distance पे लेनी है, dx width situated the depth. Okay, find the force by water on this strip. ठीक है, at x distance हमको force निकालना है. तो पहले pressure निकालो. What is the pressure? Pressure is rho into g into x. What is the force then? So force we have F is equal to pressure into the area, so which is equal to pressure we have and that is equal to pressure, dF. I'll consider smallest force. dF is equal to pressure into area. Pressure we have rho g x. What is the area over here? That 2 into dx. 2 into dx, which is equal to 2 rho g x dx. ठीक है ना? So this is the force, the smallest force on this strip we have, 2 rho g x dx. So I hope this is clear. Now the third question, C option, it is given. Find the torque of the force calculated in the part B about the bottom edge. Okay, so we want what is the torque of the force. Okay,
So torque, to find torque, total height we know 1 meter, so it is 1 minus x we have. About this point we want. So torque d tau is equal to df into the perpendicular distance is 1 minus x. So if you just calculate now, you will get rho g x dx in bracket 1 minus x is the torque we have, okay. This is C. Then D we have, find a total force by the water on this side, find a total torque by the water on the side, okay. तो देखो total force D we have is the total force that indicates integral df is equal to integral to rho g x dx, and if you just integrate this you will get F is equal to total force as 2 rho g x squared divided by 2 from where to where, from 0 length to 1, that is total na. So we have to get cancel, rho into g x squared by 2 any 1 squared we have, and force is equal to rho is 10 to the power 3, g is 10, so you will get 10 to the power 4 न्यूटन, ठीक है ना. एंड आई टोल्ड अगर आपको इसका क्या निकालना है, फोर्स निकालना है, तो आपको क्या करना होगा, प्रेशर 1/2 पे ले लो. प्रेशर इज इक्वल टू 10 to the power 3 इंटू 10 इंटू 1/2 पे ले लिया, तो ये आ जाएगा हमारा 1/2 इंटू 10 to the power 4, और इसके एरिया से मल्टीप्लाई कर दो. सो फोर्स इज इक्वल टू प्रेशर इज 1/2 इंटू 10 to the power 4 एंड एरिया इज 2 इंटू 1 2, सो यू विल गेट 10 to the power 4 न्यूटन. सो आप देख सकते हो यहाँ पर भी इंटीग्रेट करके भी वही आया है, ठीक है. चलो, and the last one, the E, what is the torque? D tau is equal to 2 rho g x dx into 1 minus x. तो इसको बस मल्टीप्लाई करो एंड फाइंड आउट करो, तो ये आ जाएगा आपका 2 rho g, तो यहाँ पर कांस्टेंट ही है, तो आउट ऑफ द इंटीग्रेशन हम रखेंगे टॉर्क टोटल. सो इंटीग्रेशन x dx माइनस इंटीग्रेशन x स्क्वायर dx फ्रॉम वेयर टू वेयर, फ्रॉम 0 to 1 0 to 1. तो देखो ये हो जाएगा हमारा 2000, मतलब 20,000 हो जाएगा वैसे तो 20,000 इन ब्रैकेट, ये हो जाएगा x स्क्वायर्ड बाई 2 माइनस ये हो जाएगा x क्यूब बाई 3 0 to 1, और ये हो जाएगा हमारा 2000 इंटू 20,000 इंटू वी हैव 1/2 माइनस 1/3, और इसको अगर सॉल्व करोगे आप तो यू विल गेट 20,000 divided by 6 and that is 10,000 divided by 3 न्यूटन मीटर. तो ये हो जाएगा हमारा टॉर्क अबाउट दैट पॉइंट, ठीक है, 10,000 divided by 3 न्यूटन मीटर. तो ये हो गया हमारा फोर्स, टॉर्क, pressure, everything is there, right? So in the 8th question, so this is the 9th problem, and in this problem it is given an ornament weighing 36 gram in air weighs only 34 gram in water. Assuming that some copper is mixed with the gold to prepare the ornament, find the amount of copper in it. Specific gravity of gold is given and the copper is given, ठीक है. तो mass of ornament is given in air and that is 36 gram. So what is mass of ornament indicates? It is mass of copper plus the mass of gold is equal to 36 gram. So this is equation number 1. ठीक है. Now it weighs 34 gram in water. मतलब कि अगर ये ornament है, अगर इसको हमने एयर में मेजर किया तो 36 ग्राम, और C को हमने वाटर में मेजर किया तो इट शोज 34 ग्राम. मतलब व्हाट इज द लॉस इन वेट इनसाइड द वाटर? इट इज 2 ग्राम, ठीक है ना. सो यू कैन राइट द लॉस इन वेट and that is equal to upthrust, and that is equal to the density of water into volume of ornament is equal to 2 gram, है ना. So I wrote weight, but I wrote over here mass. Why? Because they didn't consider the acceleration due to gravity, ठीक है ना. मतलब यहाँ पर g और यहाँ पर g cancel out हो जाएगा either way, ठीक है. So density of water is 1. So volume of ornament we can write it as
volume of gold plus volume of copper is equal to 2. So volume of gold is nothing but mass of gold divided by density of gold, है ना, प्लस मास ऑफ कॉपर डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ कॉपर इज इक्वल टू 2. अब यहाँ पर पुट करो वैल्यूज. मास ऑफ गोल्ड बाई डेंसिटी ऑफ गोल्ड इज 19.3 प्लस मास ऑफ कॉपर divided by density of copper is we have 8.9 which is equal to 2. Equation number 2. अब from equation 1 and 2 we can write, see here, mass of gold as 36 minus mass of copper. तो ये इक्वेशन हम यहाँ पर पुट कर सकते हैं and we'll get 36 minus mass of copper divided by 19.3 plus mass of copper divided by 8.9 is equal to 2. And if you just multiply now, you will get 8.9 times 36 minus mass of copper plus 19.3 mass of copper is equal to 8.9 into 19.3 into 2. तो यहाँ से आप देख सकते हो, will get this is 8.9 times 36 minus 8.9 times mass of copper plus 19.3 mass of copper is equal to this is 8.9 times 19.3 into 2. तो ये यहाँ पर माइनस कर दो, you will get 10.4 mass of copper is equal to we'll take 8.9 common and we'll get 38.6 minus 36. Okay, so mass of copper as equal to 8.9 into 2.6 divided by 10.4. अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो you will get approximately 2.2 gram of copper is added into the ornament. ठीक है, so ये हो गया हमारा आंसर. ठीक है, so next question, 10th question, as you can see over here, refer to the previous problem. Suppose the goldsmith is the one who prepares the ornament, argues that he has not added any copper, mixed any copper or any other material. It is the air cavity which is inside the gold, right? तो calculate the volume of that cavity. ठीक है, so यहाँ पर अब जो है उन्होंने बोला है जो मास ऑफ गोल्ड है वो तो ऑलवेज इक्वल टू 36 ग्राम, बट आपने मिस्टेकनली ये देखा कि जो एयर कैविटी है जिसका वेट ना के बराबर होता है, एयर कैविटी वहाँ पर जो गोल्ड में वो क्या है, वो वहाँ पर है, इसलिए वो आपको जो एक्स्ट्रा मास मिल रहा है कॉपर का, जो आप मतलब बाय मिस्टेकनली बोल रहे हो, वो नहीं, मास कॉपर का नहीं है, वो इट इज एक्चुअली द एयर का मास है, राइट? एयर का वॉल्यूम है एक्चुअली, जो कि आपने कंसिडर किया था प्रीवियस प्रॉब्लम में. ठीक है, तो देखो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं कि जो मास ऑफ ऑर्नामेंट है लास्ट में दिया था 36 ग्राम, इट इज इक्वल टू द मास ऑफ गोल्ड बोला है. ठीक है, अब मास ऑफ कॉपर हमने ऐड नहीं किया, मास ऑफ एयर कितना होता है? 0. ठीक है, तो मास ऑफ गोल्ड इतना है. ठीक है, नो प्रॉब्लम. अब बोला है कि जो जब उसने डिप किया तब उसको क्या मिल रहा था? 34 ग्राम मिल रहा था. तो लॉस तो उतना ही हो गया. ठीक है, तो इट इज द लॉस इन वेट विच इज इक्वल टू डेंसिटी ऑफ वाटर विच इज 1 इंटू वॉल्यूम ऑफ ऑर्नामेंट में क्या लिखेंगे अपन? वॉल्यूम ऑफ गोल्ड प्लस वॉल्यूम ऑफ एयर, जो कि हमको निकालना है, इज इक्वल टू 2 ग्राम. तो वॉल्यूम ऑफ गोल्ड लिखेंगे मास ऑफ गोल्ड 36 डिवाइडेड बाय द व्हाट इज कॉल्ड एज द डेंसिटी 19.3 प्लस वॉल्यूम ऑफ एयर इज इक्वल टू 2. तो यहाँ से अगर आप कैलकुलेट करोगे तो वॉल्यूम ऑफ एयर आपको मिल जाएगा 2 माइनस 36 बाई 19.3. तो ये 38.6 माइनस 36 डिवाइडेड बाई 19.3, और इसको सॉल्व करोगे तो यू विल गेट 2.6 डिवाइडेड बाय 19.3 which is volume of air present is 0.135 centimeter cube. So I hope this is clear now. Now if anyone has any doubt, they can always comment in the comment box. I'll try to reply to your comment as soon as possible. Thank you so much.